Alright guys, good morning to everyone. So let's start with today's class. So very first question कि किसने किसने ये होमवर्क करा है। एक तो सुहास ने कल yesterday ही पोस्ट कर दिया था. Others try this. Try this now if you can. ठीक है, convert करना है this function को. You have to convert this function into a lambda function. ठीक है, इस कोड को lambda function में change करो. ठीक है. Meanwhile, let's revise what we have done. Let's revise. तो सबसे पहले तो we have given a road map. सबसे पहले that we have given a road map जिसमें जिसमें हमने डिस्कस करा लैम्डा फंक्शन को 2 दिन लगेगा मतलब आज का पकड़ कर. ठीक है, तो कल का एक दिन हो गया. आज वी विल ट्राई टू कवर लैम्डा टोटली. ठीक है, टुमारो वी विल स्टार्ट उप्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है, ऑब्जेक्ट ये कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ कोडिंग नहीं है. ठीक है, यू जस्ट हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन. पाइथन कैसे वर्क करता है उसके बारे में सीखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट दिस. इसमें और भी बहुत कुछ रहेगा. ठीक है, जैसे और एक लाइब्रेरी सीखेंगे हम, ट्राई एंड सब. ठीक है, तो दिस शैल आल्सो टेक 1 day. Okay, so let's continue with lambda. So lambda, a function, it is also called as an anonymous function क्योंकि इसको कोई नाम नहीं होता है. It is a function without a name, right? हम फंक्शन में कैसे फंक्शन को नाम देते हैं, right? लैम्डा में हमें कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है. It is defined as a lambda keyword like this, है ना? And we do not need to return or yield. So इसमें कैसे we return something, right? But here we do not need to do that. It automatically done that. Do that. Okay. After that, what was the last shorthand function? It is called a shorthand function. Like इतना बड़ा लिखने से अच्छा है. We write it like this. A very simple, right? Like this. So this short line is equals to this long code. So that is why it is called as shorthand function. Okay. Then we have taken one example. This is the example जिसमें def square n लिया है, then n का square, meaning कि we want square of each number whichever we pass, right? So we simply done like this. जिसमें we have taken variable, we said lambda n colon and then n का square. ठीक है, n to the power 2, right? And then when we pass any variable, we get a value as 100 or its square basically. ठीक है, or its square. ठीक है. Then similarly we can do for summation also. So this is a function for summation जिसमें we can do like this. Whereas lambda, we define a function as lambda, then we take any variable, जो भी variable रहेंगे वो यहाँ पर ले लेंगे. ठीक है, semicolon and then a plus b. ठीक है, then similarly for a plus b into c, similarly for, मतलब ये जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से हमने इसमें इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया. Then we saw we can also take, so these are positional arguments, right? So we saw we can also take what we can say default arguments in it. Okay? Default arguments. So today we will also see how we can take arbitrary arguments and um, what was the last keyword argument. Okay? वो दो cover करेंगे and then we can say bye bye to this lambda. Okay? Meaning like provided you have to like learn this. ठीक है, इसके बाद we have seen, रिवाइज कर लो इसको अच्छे से. ठीक है, उसके बाद we have seen the same function. I guess it is exactly the same, but where we also pass the third variable. So इस default variable default argument में we have seen कि अगर if we pass what if we pass the third argument also which is already defined, then it override itself. ठीक है,
पहले ये 10 इसका वैल्यू 10 था। नाउ व्हेन वी पास 3 तो इट्स ओवरराइड। ठीक है, तो अभी पहले ए का वैल्यू 3 था, फिर 4 था, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 10 था। बट व्हेन वी पास सी का वैल्यू है 3, नाउ ए का वैल्यू इज 3, बी का 4 एंड सी का वैल्यू इज 3 नाउ। ठीक है, so it overrides itself. Then going ahead, so we saw one example of statistics. Statistics पे हमने statistics import करा as a ST. ठीक है, then we saw this function, this one. So we have this three positional argument जिसमें हमने कहा कि st dot mean, mean एक इनबिल्ट फंक्शन है स्टैटिस्टिक के अंदर। ठीक है, इसके आगे अगर लेके जाओ तो ये पूरा बताएगा। इसे बेसिक मॉड्यूल, फिर इसके अंदर इतने सारे चीजें आप कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला है मीन। मीन है, एफ मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, लो है, ये सारी चीजें कर सकते हो आप इसमें स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मीन देखा। ठीक है, मीन में वट एवर विच एवर वैल्यूज यू पास वो उसका मीन निकाल के देगा। ठीक है, इनका मीन निकाल के दे दिया, तो वी जस्ट कन्वर्टेड दैट इनटू अ लैम्बडा। हाउ? we taken a variable, then ask lambda, then taken all the variables that were asked, and this is the formula, and we query the lambda function using this, right? So we passed different numbers in it. ठीक है, so if we have defined three variables only, so we can only pass three. If we have defined three parameters, we can only pass three parameters. ठीक है, positional argument. Positional arguments. Then we have also seen for uh, list comprehension. ठीक है, list comprehension जिसमें this is a list comprehension for I in A do I square. ठीक है, for I in A do I square. You can read like this. इसको इस तरीके से रीड करना सीखो। for I in A do I square. ठीक है, तो बेसिकली फॉर आई इन ए क्या है, जो ए नाम का लिस्ट है। ठीक है, वी हैव a list naming like a is equals to 2346. So a is equals to 2346. तो हम कह रहे हैं फॉर i in a, तो फिर ये i क्या करेगा, हर एक नंबर को चेक करेगा। ठीक है, हर एक नंबर को चेक करेगा, एंड व्हाट वी आर आस्किंग कि i का स्क्वायर कर दो। ठीक है, i का स्क्वायर कर दो, तो बेसिकली हर एक नंबर का हमें स्क्वायर मिलने का। ठीक है, so that is how it is done. ठीक है, शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन ही यूज करते हैं यहाँ पर। तो सिमिलरली ये सिमिलर फंक्शन को हमने अपेंड कर दिया एक बी लिस्ट में। ठीक है, तो बेसिकली माय एम वाज हियर दैट कि हाउ यू कैन मेक अ यूज ऑफ लैम्बडा फंक्शन, एंड लाइक यू कैन मेक इट मच कॉम्प्लेक्स। इसमें आप बहुत और भी ज्यादा चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो इनिशियली लाइक वेरी इजी कोड कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा कि हमने ए ले लिया, फिर ए का एक लूप चला दिया फॉर आई इन ए, फिर ए का स्क्वायर लाइक आई का स्क्वायर दे दो, ऐसे बोल दिया। ठीक है, आई का स्क्वायर दे दो, ऐसे बोल दिया। इस फॉर लूप को फिर इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे फॉर आई इन ए दे दो आई का स्क्वायर। ठीक है, इसको कहा जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसको कहा जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सिमिलरली कुछ अच्छा, इसी को देन बाद में दिस सेम लाइन वी हैव यूज्ड इन लैम्बडा। ठीक है, दिस सेम लाइन वी हैव यूज्ड इन लैम्बडा। देन सिमिलर एग्जांपल मैंने दिया था ये वाला कि ए एंड बी ले लिया, देन वी सॉ कि ये इफ कंडीशन दे दिया, इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ए इज ग्रेटर देन, अदरवाइज डू दिस। ठीक है, इसको ही कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, कैसे इसको रीड कैसे करना है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट दिस, else print this. ठीक है, if a is greater than b print this, else this. So this is the shortest way to understand how you can write the shorthand function.
ठीक है, शॉर्ट हैंड फंक्शन कह लो या लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंसिव लाइक एक शॉर्ट कोड है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू कैन राइट लाइक दिस, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन दिस इफ दिस एल्स इफ दिस, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। एंड वंस यू राइट लाइक, ये हमने इसी के लिए सीखा था so that we can use it in the lambda, ठीक है, lambda like we have taken two variables जिसमें हमने कहा print a is let's move forward, print a is greater than b, a is greater if a is greater than b, else b is greater. So this is how we got the code, ठीक है, आउटपुट। और फिर हमने बस नंबर पास करना है, फिर कोई भी नंबर हम पास कर सकते हैं आप। then we also created a function using that, right? Anyways, then I think this was the function that I have given you in the chat and asked you to create a, okay, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, सिंपल सिंपल है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, x ले लिया, ठीक है, ले लिया, बड़ा x की जगह छोटा ही, ये कुछ भी ले सकते हैं ना, var ले लिया। देन आई हैव सेड लैम्बडा, लैम्बडा। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, दो, एक्स कॉमा वाई, राइट, एक्स कॉमा वाई। फिर मैंने सेमी कोलन दे दिया इधर, एंड देन आई हैव सेड अ फॉर्मूला दैट एक्स into y, into y. So this formula, whatever the expression is, I have written here, and then I just said कि var of कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे दो, जैसे 4, 5. If I run this, I will get the multiplication of it, right? I will get the multiplication. So this is how you can convert any def function, like इसको def function नहीं बोलते, कोई भी function को lambda function में आप convert कर सकते हैं, ठीक है, lambda function में convert कर सकते हैं। So now एक interesting बात आती है, now there is an interesting thing that you can, okay, you can make a use of these functions in lambda itself, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर इसको ले लेता हूँ। आई नो कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास करूंगा लाइक 6,9, इट विल गिव मी अ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इट विल गिव मी अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। सो आई कैन ऑल्सो, अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सो आई कैन ऑल्सो यूज दिस मल और मल्टीप्लिकेशन फंक्शन, इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन फंक्शन कर देता हूँ, ठीक है। I can use this multiplication function inside a lambda function. कैसे? So for example, I said x is equals to, right, x is equals to lambda a comma b colon, and I am saying multiplication of a comma b, okay, and also do that a plus b, okay, a plus b. So what happened basically here? So if I pass x के अंदर कोई वैल्यूज, x के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने 2,3 पास कर दिया, ठीक है, 2,3 पास कर दिया। So what will happen is now this 2 will go first here, a comma b, ठीक है, then a and b यहाँ पर रेफर होगा सबसे पहले, ठीक है, a and b लाइक 2,3 यहाँ पर रेफर होगा, तो ये यहाँ पर चले ही जाएगा, ठीक है। 2,3 में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 2 into 3 माइनस ये रहेगा 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6, 6 minus 5 is 1. So this should be your final answer, right? This should be your final answer. So this is how also you can do it. You can use any function inside a lambda function, ठीक है। बेसिकली फंक्शन एक ये ऐसी एक बॉडी होती है, इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, एक फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, फंक्शन इनसाइड अ लैम्बडा फंक्शन, कहीं पे भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। You can use it anywhere, okay. So if I run this, I will get 1 as out, right?
वी हैव डिस्कस हाउ, कैसे, तो 2 and 3 यहाँ पर चले जाएगा, ए एंड बी, ये 2 and 3 तो इसका मल्टीप्लीकेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेगा. बेसिकली दिस मेथड कैन बी यूज फॉर टू कैलकुलेट द मल्टीप्लीकेशन. To calculate the multiplication, then uh, it will add and then subtract the value. ठीक है, इस तरीके से you can get. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? Like, are you getting this? Yes or no? Yes or no? No के लिए no डाल रहा हूँ. Yes or no? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Like I'm yes okay, सही है सही है, समझ में आ रहा है? Then best. Like कैसे है that we have seen all these things. सबसे पहले like very initially we were इधर कहीं पे है ना, we were discussing कि ये x, y कर लो. Why we were learning this? Because this day we are using each and every concept that we have learned. So in order you to practice, हमारे अपने सारे सारे courses, सारे जो lectures है, like most of the lectures are on YouTube. ठीक है, तो उसका link भी मैं share कर चुका हूँ already. So go and check out those things. Okay. Watch it on 2x. 2x पे practice करो. Every day like 2x पे या 2x से ज़्यादा तो YouTube अलग नहीं. 2x पे देख लो. 2 बार 3 बार देखो. What will happen is कि उसमें already मैं revision भी लेता हूँ, so you will revise it much faster. And the second thing is you need to practice it on any code interpreter. तो VS Code पे ले लो या फिर कोई और कोड इंटरप्रेटर पे ले लो. ठीक है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट, टाइप बाय योरसेल्फ कि ये कैसे हो रहा है. अनलेस यू टाइप दिस यू वोंट गेट इट. ठीक है, यू वोंट गेट इट. सो और एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करता हूँ मैं इसी प्रॉब्लम को. ठीक है, इसी प्रॉब्लम को ट्राई टू लेट मी नो इफ यू गेट इट और नॉट. ठीक है, तो अभी मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में कर दिया. ठीक है, तो इसको मैं लिस्ट में डालता हूँ. एंड इंस्टेड ऑफ दिस I am passing a third argument. ठीक है, A B C और थर्ड आर्ग्यूमेंट में गाइस आई एम पासिंग एन अ लिस्ट. ठीक है, लिस्ट जिसमें आई एम जस्ट सिंपली पासिंग वन नंबर. ठीक है, एंड नाउ आई एम सेइंग इसको मैंने एक और 76 डाल दिया. एंड नाउ आई एम सेइंग इनटू आई फॉर आई इन सी. ठीक है, फॉर आई इन बेसिकली क्या करते हैं. तो दिस इज, ये तो एक वन एज आउटपुट दे रहा था राइट, इसका आउटपुट वन है. नाउ आई एम सेइंग इनटू फॉर आई इन सी, मतलब कि आई क्या करेगा, इसका जो सी वेरिएबल है वो चेक करेगा. ठीक है, तो अभी के लिए तो एक ही है, फिर जो भी रहेगा उसको वन, इसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी ये आ रहा है. ठीक है, तो इनटू वन हो गया, तो बिकॉज आई इज ऑल्सो वन राइट. So I have just added a for loop for this particular list. Always remember whenever there is a list, right? Whenever there is a list, so in order to use those numbers, in order to check those numbers, you have to use this loop for loop. So if I say for I in C, so I will be like first one, so one into one, right? Then I into one into two, one into three, one into four, right? Like this. And we would have got one another list like this. One first का आंसर वन आता था, then second का आंसर टू आता था, then three and then four. Okay, this would have been our answer. Okay. So if I run this again, I will get one as output. Okay. So if I add some more elements, like 2, 3, 4. Okay, 2, 3, 4. So what will happen in this case now? कि first इसका आउटपुट कैसे आया वन हमें पता है राइट. ये 2, 3 यहाँ पर रेफर होगा. ये 2 into 3 कितना हो गया 6 माइनस 2 + 3 हो गया 5 एंड 6 - 5 हो गया 1 इंटू, ये इंटू का साइन है राइट, इंटू फॉर आई इन सी.
तो ये आई हर एक सी को चेक करेगा, ठीक है, हर एक सी को चेक करेगा और वो मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट होगा वन, वन इंटू वन, फाइनल आउटपुट विल बी वन। तो हमारा वन इंटू टू, then second रहेगा टू, then three, and then four. So this should be our final output, right? If I run this now, yes, so we got this as an output. Okay. So you can make it as complex as you want. Okay. You can make it as complex as you want. Tell me also like ये भी समझा है नहीं समझा है? You got this type, yes. If you got this type, yes. ठीक है. If you got this type, yes. एक और आर्ग्यूमेंट्स का ले लेते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स का ले लेते हैं। समझा है नहीं समझा? गॉट इट और नॉट? नहीं समझा है तो और भी चीजें, लाइक आई एम गोइंग टू टेक सम मोर एग्जांपल्स जिसमें और भी आपको समझ में आएगा। So the very first is yes, only one yes. Okay. You need to practice guys, otherwise there is no way you can learn this. Okay. So let's try and understand about arbitrary arcs. कैसे लिखते हैं ऐसे arc, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं इन लैम्डा, ठीक है। तो कैसे रहेगा, लैम्डा लैम्डा यूज करेंगे, देन वी विल ऐड आर्क्स, ठीक है, देन वी विल ऐड आर्क। So now if I say, अगर मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है जैसे देयर इज अ लिस्ट, ठीक है, देयर इज अ लिस्ट और देयर इज अ टपल, एनीथिंग यू टेक, ठीक है, टपल वन ले लो या लिस्ट ले लो, फॉर एग्जांपल 100 200 150, ठीक है, एंड आई वांट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन टपल वन, राइट, टपल वन आई इन टपल वन क्यों नहीं आया? अच्छा, इन नहीं डाला है, फॉर आई इन टपल वन, है ना, रिटर्न रिटर्न आई टू द पावर टू, ठीक है। तो if I run this I will get what happened, अच्छा ये फॉर लूप में, फॉर लूप है ना, देन वी गेट सबका स्क्वायर मिल जाएगा हमें, राइट। तो इसी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर आई इन फॉर आई इन अर्ग्स, ठीक है, फॉर आई इन आर्स आई का स्क्वायर दे दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से वी कैन राइट। तो बस प्रोवाइडेड इसको हमें लिस्ट में ऐड करना होगा, ठीक है, अदरवाइज ये एरर देगा, ठीक है। एंड आई एम पासिंग द वेरिएबल्स, अभी आर्स जब भी आएगा गाइस यू नीड टू ऐड इट इन अ टपल, क्योंकि हमने पोजिशनल आर्गुमेंट्स में सीखा है, या आर्गुमेंट्स आर्बिट्री आर्गुमेंट्स में सीखा है, दिस इज अ टपल, ठीक है, दिस इज अ टपल जिसके अंदर अभी ये वैल्यूज डालते हैं 110 22 24, so you can get everyone's square, ठीक है, you can get everyone's square। तो सिंपल एक एग्जांपल अगर दे दूं, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आर्बिट्री का सिंपल एक एग्जांपल देना है। सबसे पहले you need to add this into a tuple and then you need to say a comma b, और यहाँ पर शायद और ज्यादा भी रह सकते हैं, ठीक है, ए बी सी, देन यू नीड टू से ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी सी, ठीक है, and then you need to pass number of variables, ठीक है। So what will happen here, what will happen, this a will get consumed by 1, b will get consumed by 2, and abc will consume this entire rest of the function, entire rest of the function,
शायद ये एडिशन होगा ना, इफ देयर इज एरर, ठीक है, क्योंकि ये एक टप्पल है ना, तो हमारा एबीसी कर देता है, and this abc will मल्टीप्लाई भी नहीं होगा शायद, so we have to do the this this function, इसको चलाना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जिसमें एबीसी रहेगा, and इसको इसको गलत कर दिया, बहुत सारा गलत कर दिया। Anyways, this will also not work, but try to understand what I am saying. क्या सिखाना कोशिश कर रहा हूँ मैं? Arbitrary, this arbitrary, how it will take the arguments, ठीक है? So first A will consume this one, B will consume this two, and ABC will consume this entire function, entire rest of the function, ठीक है? तो अभी ये टपल हो जाए, ये टपल एज ए टपल यहाँ पर चले जाएगा। So in order to get the element, you need to run the for loop, ठीक है? यहाँ पर भी देखो, this is a tuple, that's why we use the for loop, right? That's why we use for loop. So this is how you can do it. तो यहाँ पर we just took a simple example, जिसमें जिसमें what happened कि you have taken this r, right? r में क्या होगा, you can pass multiple, यहाँ पर कितने भी जितने चाहिए उतने arguments you can pass, ठीक है? Like 1 2 3 4 5 6 7. In the positional arguments, what we do is like एक specific set of arguments रहते हैं, जैसे a b c, ठीक है, a b c, तो उतने ही arguments you can pass, ठीक है, उससे कम ज्यादा if you pass then it will give us an error, ठीक है। And in order to access this item, ठीक है, ये चीजें access करने के लिए we have to run this for loop for I in r क्या रहेगा, ये arguments है, ठीक है, I का स्क्वायर कर लो, मतलब सब हर एक चीज का स्क्वायर कर देना, ठीक है, we got हर एक एलिमेंट का स्क्वायर, we got each and every element square, ठीक है। So this is how we do it, ठीक है, this is how we do it. अभी एक और फंक्शन लिखता हूँ जिसमें we will get the for example इवन नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है, इवन नंबर फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले कैसे लेंगे, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा ले लेंगे, देन वी वांट टू टेक आर्स की ले लो या एबीसी ले लो, है ना, वॉट एवर यू थिंक, देन देयर इज अ लिस्ट कॉम्बिनेशन दैट वी हैव टू यूज, तो उसमें क्या करेंगे, हम कहेंगे फॉर आई इन आर्स, ठीक है, यहाँ पर अगर एबीसी ले लिया, जैसे एबीसी ले लिया मैंने, you have to say ABC here also. For I in ABC, okay. For I in ABC, if I if I am percent two is equals to 0, if I am percent two is equals to 0, then रिटर्न कर दो, रिटर्न तो अपने आप आ जाता है, राइट, तो हमें चाहिए इवन नंबर। So what happened? So if I run this, what will happen? This condition will get checked against each of these elements. जैसे for I in ABC, तो ABC जो argument है, this is the argument, ठीक है, ABC में I चेक करेगा, like टू, क्या चेक करेगा, क्या ये इक्वल्स टू जीरो है, राइट, एम्परसेंड टू इक्वल्स टू जीरो है, अगर इक्वल्स टू जीरो है इट मीन्स दैट इज अ इवन नंबर, राइट, so 2 is even number, 3 is not, so true, false, true, because 2 is even number, right, so that's why we got true, 3 is false, like odd number, that's why we got false, 4 is even number, that's why we got true, and false and true, right, false and true. So this is how we can kind of
have like many different operations using lambda function. Okay, let me just one more give you a function example of keyword arguments. ठीक है, keyword कैसे लिखते हैं इसको, keyword argument. ठीक है, इनमें इसमें और arbitrary arguments में you will get a difference, so you will understand it more correctly. ठीक है, so let me just give you a let me just create a function using lambda. Okay, I've said lambda of keyword args. ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हमने सीखा है, राइट, रिसेंटली सीखा है. Then we will take a list of similar I to the power 2 for I in keyword args dot value. इसमें वैल्यू लिखना ज्यादा जरूरी है. Why? Because this keyword argument works in key value pair, right? Key value pair. So now if I add a equals to 10, b equals to 20, c equals to 40. Okay, equals to 40. So if we would not have said keyword arguments dot value, like ये value नहीं पकड़ेगा, right? 10, 20, 40, 40 से मतलब है. We don't want ABC, right? We don't want it. And keyword args लेने से you can add multiple arguments that you want. ठीक है, जितने arguments चाहिए उतने arguments you can take. ठीक है, so this is the advantage of keyword arguments, right? And the final output that we get is should be a कुछ गलती कर रहा है क्या? तो कहाँ पर गलती कर रहा है guys? Spot it. Dictionary object has no attribute values. It should be values. Okay, it should not be values. So now if we run this, we get this as output. ठीक है, if we run this, we get this as output. हर एक आइटम का स्क्वायर मिलेगा. स्क्वायर के लिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर आई इन कीवर्ड आर्ग. कीवर्ड आर्ग मीन्स जितने भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आप दोगे इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कितने भी दोगे उसके सिर्फ वैल्यूज लेगा, उसकी सिर्फ वैल्यूज लेगा. फॉर एग्जाम्पल so this is the example actually. So tell me if you are getting this, like इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे कुछ अर्बिट में आ रहा है. if I say x of this, इसको बाहर ले लेता हूँ, x is equals to, okay? So if I run this, I should get each and every value जैसे हमने सीखा था. ठीक है, कुछ इस तरीके से. So what will happen here? This I will check each and every item, right? And ये check करेगा whether this is true or not. तो ये true है मतलब true condition आएगा, true पे या false आएगा, true false. कुछ इस तरीके से. And you can add multiple condition like multiple variables. यहाँ पर 7 डाल दो, 8 डाल दो, 9 डाल दो. ठीक है, it will not throw an error. It will give you much like more details. Similarly यहाँ पर भी वही कर रहे हैं. ठीक है, कैसे कर रहे हो? b इक्वल्स टू डाल दिया हमने 1, e इक्वल्स टू डाल दिया हमने 9, है ना. You can add multiple parameters because you are using keyword arguments and you are doing the same operation for I in keyword arguments के values have to consider and you will get more output. Okay, you will get more output. So this is comparatively complex to understand, but if you are practicing daily, you will get it. Are you guys getting this or getting confused? Getting confused. If you are getting confused, let me know. We'll practice it more, you know. Or if you are getting this, type yes, so that we can go ahead. Yes.
एनी मोर आंसर्स? एक क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कैसे दो, आई डोंट गेट इट. So you can think of a question. Hmm, समेशन फंक्शन यूज करके, ठीक है, समेशन फंक्शन यूज करके. Yes, if you have any questions, type or open mic. Use use summation function and keyword argument, right? Write a lambda function for adding three elements. एडिंग थ्री elements. कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखे, उसको अगर अच्छे से, लाइक दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, अगर इसको पढ़े, यूज समेशन फंक्शन, इसको ट्राई करो भाई, ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है ना, इसको ट्राई करो. कैसे कर सकते हैं? ट्राई टू डू दिस. लूप को डॉट एम में क्यों लेते हैं? हाँ, लूप को लिस्ट में क्यों लेते हैं? लूप को लिस्ट में क्यों लेते हैं? ठीक है, वेट, बताता हूँ. तो समटाइम्स सिंटैक्स ही होता है. अगर मैं इसको नहीं भी लूँ तो इतना प्रॉब्लम है नहीं गाइस. अरे नहीं, लेना पड़ेगा. सिंटैक्चुअल है, क्योंकि इट विल, लाइक हम लैम्डा के बाद कीवर्ड ले रहे हैं, राइट? अगर मैं सिंपली इसको ऐसे ही ले लूँ, राइट, इट इज अगेन, so you have to take it inside something, like for I, like for example, if uh, I equals if 100 in list 1, no. So that is the question you have said. So it is more of a case of syntactual. Okay. So whenever you use lambda or whenever you perform such a operation, you need to add it in the list. Although we get a output in the list, but it has, like, it supports this. अगर मैं ओपन छोड़ दूं तो ये कीवर्ड आर्स को ये कैच नहीं कर पा रहा, ठीक है. इट इज मोर ऑफ अ सिंटेक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, सिंटेक्चुअल प्रॉब्लम. ये सिंटैक्स है इस पाइथन का, जिस तरीके से बना है, ठीक है. सेकेंड थिंग, इस पे आते हैं फिर से, ठीक है. यूज समेशन फंक्शन एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, राइट ए लैम्डा फंक्शन ऑफ फॉर एडिंग अ थ्री एलिमेंट, ठीक है. फर्स्ट हमने राइट लाइक क्या बोल रहा है, इसको पढ़ लिया, राइट. नाउ वी वांट टू, लाइक, सम वंस वी रीड दिस, इट लुक्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट, कि यार ये क्या बोल दिया, क्या बोल रहा है, लेकिन बट व्हेन वी डू दिस, इसको अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़ें, लाइक यूज अ समेशन फंक्शन, ठीक है. समेशन फंक्शन क्या है? ठीक है, समेशन फंक्शन है, सम इज अ समेशन फंक्शन, ठीक है. सम इज अ समेशन फंक्शन. देन देयर इज अ कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है. कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है? दिस कीवर्ड आर्गुमेंट, दिस इज अ कीवर्ड आर्गुमेंट, राइट. देन देयर इज लैम्डा फंक्शन यूज कर लो, ठीक है, lambda function. So this is how we need to use lambda function. And three elements चाहिए, adding a three elements. It means three elements पकड़ लो, a comma b comma c, ठीक है. So these are three elements. Yeah, these are three elements. अगर क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से तोड़कर देखने की आदत पड़ गई, so then there is no any
question which is hard for you. Okay. So now I can see there are these four things that I have to use. So very first thing is lambda. Okay, क्योंकि lambda से हम function लिख सकते हैं. So I am saying x is equals to lambda, and I have to use three variables, right? Three variables, right? I have to use this three variables. तो मेरी दो चीजें तो यहाँ पर यूज हो गई, right? But they said कि keyword arguments use करो. So instead of ABC, I will add keyword arguments. Okay. Instead of ABC, I will add key arguments. Then they say use a summation and use summation of the keyword arguments. So keyword arguments समझ क्या थी A, B, C, right? अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, A, B, C, ठीक है? So this is my function. अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ, ठीक है? Keyword arguments के लिए भूल जाऊँ. So this is my answer, right? 1 2 3 4. अगर मैं ऐसे कर दूँ, so I will get a summation of these three numbers. अब जिसमें हमें error मिला है. Sum takes only two arguments. Right. This takes only two arguments. तो ABC को हमने देना ही नहीं चाहिए था. अभी के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है? तो क्या चल रहा है? Int object is not iterable. It should ABC A comma B. Wait a second. Some summation of 3 comma 4. अच्छा, इसका सिंटैक्स कुछ अलग है. सिंटैक्स समेशन का सिंटैक्स है summation of A comma any B comma A. Okay, okay. So you have to say like this A comma okay, B like this. Let's see whether it works. No, it does not work. Please one positional argument given 0. Okay, let's back to question again. Let's back to question. Comma है क्या मैं दिया नहीं क्या? So there A is equals to 7, comma B is equals to 9 like this. 9, it is not working. A into B. Here you are saying, लेकिन हमें तो समेशन करना है. Let me see. इसको क्या है? Let's come back to question again. तो हमने करना है समेशन यूज करना है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज करने हैं, लैम्डा एंड एबीसी हमने यूज करना है. तो एबीसी को मैं कुछ इस तरीके से ही लिखता हूँ, ठीक है? एबीसी या फिर ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू दिस and c equals to this. Okay, because we want to use this keyword argument. ठीक है? Keyword arguments. So instead of ABC, I will take this keyword argument. Keyword arguments will take any number. ठीक है? And I have to say keyword arguments dot values. Okay? I have to say keyword arguments dot values. So it means ये क्या लेगा? ये क्या लेगा? सबकी values ही pick करेगा. ठीक है? So basically when तो अभी पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा, नहीं करता है, ठीक है? बट द वे लाइक एक तो मैंने क्वेश्चन ही गलत फॉर्म कर लिया गाइस, ठीक है? तो दैट माइट बी एन इशू, एल्स आई डोंट नो, बट कीवर्ड आर समेशन, तो कुछ इशू है दिस समेशन का. तो ये नहीं रहा, शायद अब वो चल गया. यस, अब चल गया, ठीक है? So basically
whenever you understand or whenever you write see any question कि भाई ये क्या लिखा है use summation and keyword arts and write a lambda function for adding a three numbers ठीक है so you don't have to get panic you just have to देखो we have faced so many errors ठीक है but even though we somehow got some answer ठीक है जिसमें जिसमें how how we did it first we break down the question ठीक है break down the question सबसे पहले मुझे पता हमें पता चला कि we have to do some summation use the summation uh, function for keyword arguments क्या रहेंगे any arguments मतलब कितने भी arguments you can add multiple arguments there but specifically in the end they have mentioned only use three arguments ठीक है so instead of this we took three arguments like number of arguments की जगह पे कुछ specify भी किया तीन arguments ही लेना then use a lambda function तो lambda function तो हमने सीखा है right so what we did we took a variable then we specify lambda function and we know if there is a keyword arguments we write it here अगर arbitrary भी है यहाँ पर लिखेंगे default भी यहाँ पर लिखेंगे positional भी है यहाँ पर लिखेंगे then we need to use if there is a keyword arguments then we need to write something like this कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स डॉट वैल्यूज क्योंकि जो भी इनपुट पैरामीटर्स हम पास करेंगे उसकी वैल्यूज हमें चाहिए और उसके ऊपर हमने समेशन फंक्शन यूज कर लिया दिस वन एंड वी समहाउ गॉट आंसर ठीक है इवन आई आल्सो डिडंट नो कि ये कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था ठीक है सो देयर वाज दिस समेशन फंक्शन ऑलरेडी वाज फेलिंग ठीक है और वो अभी भी फेल ही कर रहा है और वो कैसे कर रहा है दोनों ए ए 1 comma b is 4 कुछ ऐसा है लेकिन ये तो एरर दे रहा है anyway so somehow we got this answer ठीक है somehow we got this summation function हमने सीखा है कहीं पीछे लिस्ट में या कहीं कपल में सीखा रहेगा ठीक है so somehow we got this answer so when we try to learn lambda function we just wanted to learn this क्या सीखना था कि कुछ इस तरीके से इन एफर्ट्स इन फंक्शन को कुछ इस तरीके से यू कैन कन्वर्ट बट वी मेड इट वी ट्राई टू मेक अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सो दैट आवर माइंड विल अंडरस्टैंड द लॉजिक ठीक है इनका लॉजिक सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इसको बहुत कॉम्प्लेक्स करा जा सकता है ठीक है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि how what things happening there okay? what things happening there otherwise in sub function को you can write it in the ये इस functions को इन methods में भी लिख सकते हो ठीक है so this is how you can do it ठीक है so quickly write your questions here quickly write here a into b multiplication नहीं करना a into b तो नहीं करना so quickly write your questions here कि क्या क्या मतलब समझ में आ रहा है if everything is clear write clear in the comments otherwise let me know if you want to repeat this or see you have to work like practice a lot now okay so now is the time that we are at the very end of the python okay we have covered 90% 90% 90% of python is done okay 90% of python is done and now we just want now we are at a very last part जिसमें सिर्फ oops बचा है यार छोटे मोटे फंक्शंस बचे हैं देन हम डेटा साइंस के लाइब्रेरीज पढ़ना शुरू कर देंगे so we have covered 90% so that is also a great thing okay? and that too I think डेढ़ महीने में हमने कवर करा so if you इसमें क्या करना है अभी you have to go through each and every recording you have to go through each and every फाइल जो मैंने सिखाई है ठीक है and you also have to practice like assignments complete करो सबसे पहले ठीक है
नहीं, सबसे पहले प्रैक्टिस करना होगा सब पीछे जाकर। देन यू नीड टू स्टार्ट एन असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट समझने के बाद असाइनमेंट क्वेश्चन में जो भी इश्यू रहेगा वो लेके आओ क्लास में। ठीक है, जो भी इश्यू रहेगा वो क्लास में लेके आओ, देन वी विल अंडरस्टैंड दिस। तो एक क्विकली एक हायर फंक्शन नाम से भी एक है। तो टुडेज क्लास विल बी लिटिल बिट लेंदी। तो 2.3.2 जिसमें एक और फंक्शन हमें सीखना है, हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, so this is the extension of lambda function। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा ज्यादा ही स्लो स्लो सीख लिया। हायर फंक्शन क्या है, इसको कल ही ले लेते हैं। एनीवेज, तो लैम्बडा के लिए हमारे 3 दिन जा रहे हैं। यू गेटिंग दिस और नॉट राइट? अगर नहीं समझ में आ रहा तो अलग तरीके से समझेंगे। क्लियर नो क्लियर? क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? ठीक है, एक क्विकली रिवीजन ले लेता हूँ तो समवॉट समझ में आएगा। ठीक है, समवॉट समझ में, इसको अभी मैं 3 डेज करूँगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी वांटेड टू लर्न, ये हमने सीखा है कैसे। सबसे पहले वी डिफाइन अ फंक्शन, वी राइट सम एक्सप्रेशन एंड रिटर्न इट, एंड देन वी कॉल अ फंक्शन। ठीक है, तो इसको ही लैम्बडा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी राइट लैम्बडा, देन राइट आर्ग्यूमेंट्स। जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहेगी यहाँ पर, इधर पोजिशनल रहने दो या फिर है ना डिफॉल्ट रहने, जो भी आर्ग्यूमेंट्स रहेगी वो सबसे पहले यहाँ पर आएगी। देन देयर इज दिस सेमी देन कोलन, वो कोलन ले लो। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट ही यहाँ पर ले लेना। देन वॉट एवर एक्सप्रेशन यू राइट दैट एक्सप्रेशन हियर। When you don't want to use return function, you don't want to define a function, ये दो चीजें गायब हो जाती है in terms of lambda। दिस इज गायब, इसको उठा लिया एंड देन इसको ऐसे कुछ कॉल कर लिया, लाइक इसको x में स्टोर करके we have called it। ठीक है, we have called it। इतना इतना भी समझ गया, मतलब लैम्डा तो समझ चुका है। ठीक है, going ahead, what we did is we just made these expressions little bit complex so that your thinking or your logical thinking will increase। ठीक है, उसमें थोड़ा सा और improvement आ सके। ठीक है, so that's why we try to made it somewhat complex। Okay, somewhat complex। So the very second example we took, so इस पूरी चीज को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है। If you don't store it in the variable, you just have to add it to a tuple and just query using another tuple। ठीक है, when we have seen this summation। ठीक है, इसमें भी हमने सिंपल करा है, sum of a and b, और फिर इसको a and b से रिप्लेस कर। तो व्हाट इज आवर इम्पोर्टेंट, यहाँ पर मैंने क्या यूज करना है, इसको यूज करना है एंड देन इसको यूज करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, लैम्डा a कॉमा बी कोलन, a कॉमा बी कोलन एंड a प्लस बी। ठीक है, इसको कॉल कर लिया, वी गॉट द आंसर। ठीक है, वी गॉट द आंसर। देन सिमिलरली इसको भी सेम चीज है। So I don't want to define a function, I don't want to return a function। तो ये चीज तो मेरे को चाहिए नहीं, ये चीज तो मेरे को चाहिए ही नहीं। So what I will do, I will define a lambda जिसमें ये वेरिएबल्स ऐड कर दूंगा एंड देन एक्सप्रेशन यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, so this is like a conversion। इसको बस मैंने कन्वर्ट कर लिया। Now you have to think कि how I can write a independent lambda function not by not bothering this, है ना, by not bothering this। So we started doing that from here। So here we first, तो हमें क्या चाहिए, दो दो वेरिएबल्स का एडिशन एंड उसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए थर्ड वेरिएबल के साथ। सो वी डिफाइन अ लैम्डा व्हेन देन वी सेड a कॉमा b कॉमा c का वैल्यू हमने दे दिया, कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया एज अ 10 एंड देन कोलन एंड देन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, then this expression, after this expression we just pass some variable and हमें आउटपुट मिल गया।
आउटपुट मिल गया। देन सिमिलर थिंग वी डिड, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस डिफॉल्ट वेरिएबल we define like we pass our own variable. So we pass our own variable, जिसमें नाउ a का वैल्यू ऐसा 3 चले जाएगा, b का वैल्यू 4 चले जाएगा, c का वैल्यू इंस्टेड ऑफ 10 3 चले जाएगा। एंड देन ये ऑपरेशन तो यहाँ पर जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है। तो a प्लस b जो भी आएगा लाइक 7 आ जाएगा इनटू 3 दैट इज 21 शुड बी द आउटपुट, राइट। 7 into 3 is 21. Then we took some another library that is statistics library. इसको भी अच्छे से सीखेंगे इन मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग या numpy में सीखेंगे, ठीक है। So the very first thing that we took understood about statistic library is mean. मीन क्या करेगा, जो भी पैरामीटर्स आप पास करोगे, जो भी नंबर्स पास करोगे उसका मीन दे देगा। So we took these three numbers initially. Okay, we took these three numbers initially and we got the mean. So somehow we got to know that this is the expression, okay, and these are the parameters. So we know what to do. We take lambda, took the parameters here and expression here, and when we pass these expression, we got the output from this expression. Okay. So parameters pass कर लिए, expression से output मिल गया. Then we started doing this pro coding. Okay, pro coding जितना छोटा से छोटा कोड लिख सकते हैं, ठीक है, जितना छोटा छोटा कोड लिख सकते हैं, छोटा कोड कहते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से या किस तरीके से, इस सेम कोड को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये x इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट आई हैड सेड कि इस इधर इधर से ही कॉपी करता हूँ, ठीक है। फॉर i इन x, ठीक है, फॉर i इन x, फॉर i इन x, print this, okay, print this. So if I run this, I will get हर किसी का स्क्वायर, ठीक है, हर किसी का स्क्वायर। So this is how I got, right? तो इस सेम चीज को कुछ इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक है। तो दिस इज a या x पकड़ लो, a पकड़ लो, यू कंसीडर, ठीक है। बेसिकली ये a है, ठीक है। फिर हमने कहा हाँ फॉर i इन a एंड देन i स्क्वायर, ठीक है। एंड ये लिस्ट हमें यूज करना होता है बिकॉज सिंटेक्चुअल एरर, लाइक अगर मैं इस लिस्ट को हटा दूं तो देयर प्रोबेबली अ सिंटेक्चुअल एरर, ठीक है। बेसिकली लैम्डा के बाद बस एक ही लाइन देनी होती है, ठीक है? बस एक ही लाइन देनी होती है। सो दिस इज व्हाई वी like convert this long code into a short code. So that is why list comprehension is understanding a list comprehension is necessary. लैम्डा के बाद बस एक ही लाइन यूज कर सकते हो, इसके बाद अगर मैं ऐसे कुछ कर दूं तो इट विल नॉट टेक दैट आउटपुट और नॉट कंसिडर दैट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लैम्डा का ये एक इशू है कि यू हैव टू राइट इन अ सिंगल लाइन। कितना भी बड़ा कोड रहने तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट कोड इनटू अ सिंगल लाइन, ठीक है। एवरी टाइम यू विल सी अ सिंगल लाइन। इसको हम कैसे लिखते थे, इसको हम ऐसे लिखते थे, फॉर आई इन ए, फॉर आई इन ए, ठीक है। फिर हम कर कहते थे कि b is equals to I to the power 2, then b मत ले लो again, then b dot append x। इतना ज्यादा कोड लिखते थे हम इसके लिए, सिंपल ये चीज के लिए इतना ज्यादा कोड लिखते थे, ठीक है। बट since this is lambda we have to compress the code, ठीक है, compress the code। So these I probably see you are failing to understand these long code, ठीक है। ये तो इसको प्रैक्टिस से ही आएगा गाइस, ये क्या है। अदरवाइज लैम्डा तो इतना ही है कि लैम्डा पैरामीटर सेमीकोलन एक्सप्रेशन और उसको कॉल कर लो, ठीक है। इसके अलावा लैम्डा कुछ है ही नहीं।
हर एक चीज में यही देखोगे, क्या है, किधर है, किधर है, किधर है, यस, लैम्बडा पैरामीटर्स एक्सप्रेशन कॉलिंग, इससे अलावा तो कुछ है नहीं लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा पैरामीटर्स एक्सप्रेशन एंड कॉलिंग. The another thing that we have seen is if you define a function, you can also use that function inside a lambda. Okay. So instead of writing this big, we just use that function because lambda function accepts only single liner expression. Okay. So somehow you have to do the operation somewhere else and use directly a function. So here also we try to make it a little bit complex. ठीक है, यहाँ पर एक और loop add कर दिया for this particular list. Then we have also seen for arbitrary. Arbitrary के लिए कैसे रहेगा? तो वी नो आर्बिट्री क्या करता है, इससे इसका सीक्वेंस हमने ऑलरेडी लिस्ट में या डिक्शनरी में सीखा है, फंक्शन में सीखा है दैट सबसे पहले तो ये दो वेरिएबल्स स्टार्टिंग के ये दो कंज्यूम कर लेगा, व्हाट एवर रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स विल बी कंज्यूम्ड बाय दिस एबीसी, ठीक है। और फिर उसके लिए हमें ये लूप चलाना पड़ा, राइट। हियर आल्सो यू कैन सी आर्गुमेंट्स के लिए लाइक यहाँ पर अभी कितने भी आर्गुमेंट्स यू कैन पास, और भी आर्गुमेंट्स यू कैन पास, ठीक है। एंड हमने सिर्फ बोला फॉर आई इन आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स मींस दिस आई का स्क्वायर कर लो, मतलब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर लो, एंड दैट वी हैव गॉट दिस, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर, ठीक है। हियर आल्सो सेम, इट इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू लैम्डा और एबीसी आज ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन यू हैव टू मेंशन एबीसी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, बट यू हैव टू मेंशन दिस स्टार. It indicates that this is an arbitrary argument. It means it can take multiple arguments. ठीक है, कितने भी करता है, वन से लेकर कितने भी, ठीक है। Then you have mentioned this for I in ABC. ABC माने this. And you are checking this condition. If I am percent 2 is equals to this equals to 0, तो बता देते हो, वो बोल रहा है true false true false, ठीक है। फिर each element लेगा, मतलब basically I will check 2, फिर ये I यहाँ पर जाएगा 2 ampersand 2 0 है क्या, राइट 0, इसलिए 2 आ गया। It will check condition, yeah, it will check condition and it will return. Then similarly keyword arguments, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में अभी कैसे यहाँ पर सिर्फ हम एबीसी मेंशन कर रहे थे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में यू नीड टू मेंशन दिस डॉट वैल्यूज आल्सो बिकॉज़ दीज आर की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स में क्या रहता है, ए इज अ की, ए इज अ की, 10 is a value, so we need to do the operation on numerical terms only, ठीक है। So that's why we took a value only, that's why we took a value. And similarly when operation goes on for I in keyword values, तो यहाँ पर सिर्फ values उठा रहे हैं हम 10 20 40 1 9 और इन सब का स्क्वायर कर रहे हैं, इन सब का स्क्वायर कर रहे हैं, so you can see each atoms have the square, तो इस तरीके से is happening. And the last some question we try to take. तो क्वेश्चन के लिए अप्रोच कैसे होना चाहिए, दैट वी हैव सीन, राइट अ क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, segregate or split down the question into multiple parts, whichever parts you have made necessary, and then try to execute it. Yeah, try to somehow execute it. So this has been the revision. Okay, revision. So today will be your work today will be practice. Yeah, practice. जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ डीप मैनर, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। डबल राइट कर लो, नहीं समझ में आ रहा है फिर से राइट करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव सम मोर क्वेश्चंस feel free to drop in the comments, and if you have understood most of the today's session, most of the today's session, type win in the comments guys, type win in the comments. Question रहा तो drop it here or in the group guys, drop it here in the group. Great, 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 great. तो प्रैक्टिस करो भाई, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके ऊपर असाइनमेंट आई हैव प्रिपेयर्ड, तो वो मैं ड्रॉप कर देता हूँ आज ही, ठीक है।
Aji. Otherwise, practice, practice, and practice. Alright, guys. See you in the tomorrow's lecture. Bye bye. Have a great rest of the